बैड डेट्स क्या होते हैं? डेट्स होते हैं कर्जे, बैड होता है बुरे। ऐसे कर्जे तो बैड हो गए हैं, यानी कि दो रिसीवेबल हु आर अनएबल टू मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, दे आर कॉल्ड बैड डेट्स। Those trade shows their incapacity to pay back their debts, who are unable to pay back debts which are due to them, are called bad debts. Bad debts जो है बेसिकली हमारा एक्सपेंस होता है और वो हमेशा डेबिट होता है क्योंकि एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट. So those people who are unable to make the payment on the due date and has become bankrupt. Okay. इसको आप और insolvent. क्या can you tell me what is the meaning of insolvent and bankrupt? सर bankrupt जब आपके पास पैसे नहीं होते. Insolvent का मतलब है, bankrupt का मतलब है कि his private estate is not able to pay you anything. Let's suppose मैं आपके अब्बू से 50 लाख रुपए लेके धार लिया आपके अब्बू से. आपके अब्बू ने कब वापस करेंगे? ड्यू डेट पर. मैंने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं कहां से वापस करूं? तो मेरे पास जाती मलकियत के तौर पर भी कोई चीज नहीं निकली, यानी मेरे नाम पे ना कोई घर था, ना गाड़ी थी, कुछ भी नहीं था. ऑब्वियसली वो मेरे पैसे रिकवर नहीं कर सकते. तो वो पैसे जो जब क्योंकि मेरे नाम पर कोई चीज ही नहीं है, किसको बेच के वो पैसे रिकवर? ज्यादा मुझे जेल कर सकते हैं ना. दैट इज बेसिकली दैट इज मींस बैंकरप्सी, दैट इज मींस इंसॉल्वेंसी. जी का मतलब उर्दू में होता है दिवालिया निकल जाना. जी. Those trade receivables who have become bankrupt or insolvent, they are called bad debts, and bad debts is an expense for the business. That's why it is debited. That's why it is debited. And trade receivable is going to be credited because those trade receivable who was able to make the payment to us, but now they are not going to make the payment to you because they have become bankrupt or insolvent or unable to make the payment to us. तो वो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे बिकॉज एसेट हमारा डिक्रीज कर रहा है. डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट बिकॉज दे आर मोर योर ट्रेड रिसीवेबल. वो आपके ट्रेड रिसीवेबल रहे ही नहीं है. क्यों नहीं रहे? बिकॉज देयर डेट हैज बिकम बैड. सो दैट इज व्हाई इट इज called debt is an expense for the business, and expense always debited. And trade receivable आपके एसेट होते हैं. डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन एसेट. डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट because they are no more your trade receivable, they have become bad debts. Bad debts is an expense for the business, that is why it is always debited. और bad debts से हम बच नहीं सकते. Bad debts होने ही होने हैं जी. हम बच नहीं सकते. Bad debts होने होने हैं. अब इसकी वजह क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ. ये एंट्री आप लिख लें और यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं. नहीं सर, कोई इशू नहीं. Very good. So, why there is a bad debt, sir? If you feel that you are not confident about a person who is going to make you the payment, so why you are selling goods on credit to him? You are not supposed to sell goods on credit to that person whom you are not confident that he is going to make you the payment in the future. Don't do anything. The problem is that all the goods which we used to manufacture, all the business, they used to sell goods on credit. It means that all the manufacturing businesses in all the entire world, the businesses are basically selling their goods on credit. जी. When they were already delivered the goods to the person and he has gone for the checkup or the effectiveness of the goods, that either they are up to the specification, then they give us the payment. So payment is already paid after some time when the goods have been delivered. So there is always a chance of bad debts because we are selling most of our goods on credit. And when the large amount of sales are going to be on credit, so there is always a chance of bad debts that some of the people may not be able to, we may not be able to recover those amount from those receivables and it can become bad. अब इस तरह कर लेते हैं कि हम हर चीज कैश पर ही बेचना शुरू कर देते हैं. हम सारे कैश पे सेल करना शुरू कर देते हैं. तो क्या होगा, मैं 5 करोड़ का माल मंगवाता था यूएसए से, और सॉरी यूएसए में बेचता था यूएसए में. मैंने उन लोगों से कहा कि भाई अब 5 करोड़ का माल जो पहले मैं आपको क्रेडिट पर देता था अब मैं आपको कैश पे दूंगा. उन्होंने कहा ठीक है.
आप कैश में देना चाहते हैं तो हम किसी और सप्लायर से माल ले लेते हैं, बाय गुड बाय बाय, तो मेरा 5 का कस्टमर जो है वो मेरे हाथ से निकल गया. सो बिकॉज वी आर कस्टमर्स नॉर्मली दे आर getting goods and we are selling goods to them on credit, and a big large is involved in that, so we can't afford to lose our customers because they will move to our competitors. Means that we have to sell goods on credit as we don't have any chance, and there is always a chance of bad debts which can be minimized but can never be, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं. तो ये एंट्री है जी बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल की. और बंदे का नाम दिया हो, जो बंदा बैड डेट्स हो रहा है या जो बंदा बैड डेट्स कर रहा है, तो उसका हम और बैड डेट्स का अकाउंट बनाते हैं. बैड अकाउंट जो है वो हमारा कैसे बनता है, उसके लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा. तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ. आई डोंट नो मैंने लिखवाया था पहले कि नहीं लिखवाया था, लेकिन अभी मैं लिखवा रहा हूँ. व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट all expenses and income account are closed with the name income statement. You can write it also. The name income statement. All expense and income account are closed with the name income statement. All assets and liabilities account are closed with the name carried down. So all asset and liabilities account are closed with the name balance carried down, and all expense and income account are closed with the name income statement, because their balances are transferred to the next year. Because their balances are transferred to the next year. This is a very important statement which I have made you write, that all expense and income account are closed with the name income statement, क्योंकि उनके balances next year transfer नहीं होते, लेकिन all liabilities account are closed with the name balance carried down because their balances are transferred to the next year. उनके balances अगले साल transfer कर देते हैं, वो अगले साल transfer हो जाते हैं, उनके balances next transfer होते हैं, जबकि जो इनकम और एक्सपेंस है उनके बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होते. फॉर एग्जांपल, आप अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं लिखते हैं क्या आप अपनी बैलेंस शीट में अब्दुल्ला कैपिटल, जो आज कैपिटल आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, आपने कैपिटल कब लगाया था? जब बिजनेस शुरू हुआ था. लेकिन 10 साल बाद भी आप अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं. 50 साल बाद भी कैपिटल लिखते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट. इसी तरह बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग आपने 10 साल पहले परचेज की है, बट यू विल स्टिल राइट द बिल्डिंग इन योर नॉन करंट एसेट even after 10 years, because the building is still with you and you are using it. And on the same reason, balances are going to be transferred to the next year, brought down by carried down, or carried down brought down, और अगले साल assets और liabilities चले जाते हैं. तो assets और liabilities के account को आप balance carried down से close करते हैं, because their balances are transferred to the next year with the name balance brought down. लेकिन expense और income के account को हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस इनकम का अकाउंट अगले साल नहीं जाता. आप ये सोचते हैं कि क्यों, कैसे नहीं जाता? आप देखिए, आप इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो आप इनकम को एक्सपेंस कंपेयर करते हैं, वहां से क्या निकालते हैं? सॉरी सर, जब इनको इनकम स्टेटमेंट में हम इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में कंपेयर करते हैं तो वहां से क्या निकलता है? प्रॉफिट. वो प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, अगर लॉस हो तो हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं. इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस मर्ज हो जाता है कैपिटल में, एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट तो आगे जाता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस एंड इनकम के अकाउंट को आज के बाद हम बैलेंस कैरिड डाउन से क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज करेंगे, बिकॉज दे आर ट्रांसफर्ड टू द इनकम स्टेटमेंट एंड देन they are never carry forward to the next year. They are merged into capital. Part of capital, and that's it. Profit is added in capital, loss is subtracted from capital, and that's it. But
Assets and liabilities account are closed with the name balance carried down because their balances are transferred to the next year. Balance carried from the balance brought down of the next year. So how we are going to prepare the bad debts account? I'm just going to make you the preparation, the dollar sign we are going to use. So bad debts is debited with an amount of 500. So I will write the amount on the debit side with 500, and the name will come off the opposite side with it, which is obviously in that case is trade receivable. That's it. I'm going to total. There is only one one bad debts only in this particular T account. So I'm going to close the account. So the account is going to be closed 500, obviously, because the debit side is heavier by 500. I will write the same amount on the credit side, 500. And at the end of the year, I will write the carried down, balance carried down. Sorry, balance carried down will not come because expense and income account is closed with the name income statement because their balances are transferred to the income statement, and then only profit goes ahead and merged into capital, or loss goes ahead and subtracted from capital to get the resultant amount of capital. तो इनकम और एक्सपेंस को इनकम क्लोज करते हैं और आगे ट्रांसफर नहीं करते। जी, ये बात समझ आ गई है? हाँ जी। आगे जी नेक्स्ट चलते हैं जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले साल सपोज कर लेते हैं कि अब्दुल्ला ये हमारा 2010 का ईयर है और ये भी हमारा 2010 का ईयर है। Just giving you an imaginary figures, we are solving with imaginary figures. So in 2011, what has happened that we are going to sustain, we have sustained more bad debts. Bad debts has occurred 200, and there was our trade receivable whose name was and he has become our bad debts. So when name is given, you will write the name of that particular person. But if the name is not given, then you will write the name of trade receivables because they must be our trade receivable, but the name is not mentioned. If the name is given, you will write the entry bad debts to A. Bad debts is an expense, it is always debited. A is our trade receivable. A का asset हमारा decrease कर रहा है. Decrease in asset credit because he is no more my trade receivable because the debt has become bad. So he's not going to make me any payment. So I will decrease my trade receivable. So decrease in asset credit, and the date of this particular happening is 1st July 2011. Then again, on 1st October, one of the customer whose name was B, he has denied to make the payment on the due date. So that customer has become our bad debt. So I will write the entry bad debts debit, and B is going to be credited because B is no more my trade receivable with that amount. And the amount of this is 400, and definitely I'm taking the imaginary figures over here, and the amount is again B will be credited by 400. So if I will post this entries into the T account of 2011, I will write 2011 over here first, and on the same side I will write 2011 over here because I am going to prepare the T account of 2011, and in the first entry is going to happen on 1st July. So I will write the days, that is 1/7. And what will happen, bad debts is going to be debited by 200, and the name will come off the opposite side, and the name opposite side is basically A. So I will write A, and the 200 is debited because of A. Then again on 1st October, and the date of 1st October is 110, bad debts is going to be debited by 400 because bad debts debit हो रहे हैं 400 से. किसकी वजह से? In this case it is B because B की वजह से हमारे हैं कितने के 400 की. So this is the two amounts which are to become bad for 2011. Now I am going to go for the total of this T account, and the total is basically 200 plus 400. It will become 600. Right, obviously will become 600, but I will not close the account with the name balance carried down because it's an expense account, and income and expense account is closed with the name income statement. So I will write the name income statement, and this will come 600 because these balances are transferred to income statement from where either we will sustain a loss or a profit to be added into capital or subtracted from capital. So this T account of 2010 and 2011, the T accounts are prepared separately for each year, but in the same format. I repeat again.
The T accounts are prepared separately for each year, but in the same format. Format is the same, but accounts are prepared separately and they are independent from each other, because they are not concerned with each other at all, because nothing has been transferred from the previous year to the next year, and nothing has been transferred from the previous year, the next year to the previous year. Right? Yes. This is how we prepare the account of bad debts. If there is any problem, you can ask any question. जिसे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही सर मेरी, मैंने बोला था पहले। जी हेलो जी, आवाज आ रही है मुझे। कोई मसला है तो बताएं। हाँ, ओके नहीं सर जी ओके जी। तो आपको कैसा लगा कि कितना इफेक्टिवनेस है सर हारिस की ऑनलाइन के ऊपर भी, कैसा महसूस? सर अच्छी है, बहुत शुक्रिया, जैसे बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि लाइक बच्चा अगर तारीफ करे तो फिर टीचर का दिल तो खुश होता है, सारी बात है, होना भी चाहिए बंदा, जी। तो फिर तारीफ भी होनी चाहिए, क्यों जी, बनता तो है। हाँ जी सर। अच्छा, अब 2012 में देखते हैं जी। हम 2012 में हम देखते हैं जी कि हमारे कौन से बैड डेट्स हुए हैं। एक बंदा था हमारे, बैड डेट्स हुआ हमारा कब, 30 जून को 2012 में, and I will pass the same entry for bad debts, which is again bad debts debit, and trade receivable is going to be credited because I don't know the name of the person. When the name of the person is known to us, you will write trade receivable, because whatever he is going to be, he has to be our trade receivable. Otherwise, there is not going to be any bad debts. Bad debts is always being made because of the non-payment of our trade receivables. ट्रेड रिसीवेबल जब पे नहीं करते तो ही हमारे बैड डेट्स होते हैं। 31 दिसंबर को एक बंदा था, उसने जो पैसे दिए हमें, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। ही वाज बेसिकली, और उसकी हम एंट्री पास कर देंगे, एंड दैट इज द अमाउंट इज बेसिकली 800, as I'm taking the imaginary figures I discussed with you. Now I'm going to prepare the T account. So 2012 में बैड डेट्स हमारे डेबिट हो रहे हैं कितनी अमाउंट से, 100 से, इसकी वजह से, ट्रेड रिसीवेबल की वजह से, क्योंकि मैं नाम नहीं ट्रेड रिसीवेबल यूज करूंगा। Mention and date is 36. 36 is the date. Again, bad debts are debited with an amount of 800, and the name will come off the opposite side, which is C over here. And I will use again 31st December, 31st 12 is the date, and that's it. I have recorded all the bad debts which basically lies in this year or which belongs to this year. Now I'm going to go of this side. The total will become obviously 900, and I'm going to balance the two sides. But balancing of the two sides doesn't mean that you are going to write the balance carried down with the name balance carried down. You will write the name with income statement, which is going to be your balancing figure at the end of the year. Obviously, on 31st 12, you will write with the name income statement, because these 900 will be transferred to the income statement as expense. It is not going to be carried next year. So this is how we are used to prepare the account of bad debts, and bad debts account are usually prepared in the same format. They are prepared independently for every year. हर साल का अलग है, साल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फॉर्मेट हम सेम ही रखते हैं उसका जी। ये हमारा था बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट। इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं सर। अब सबसे पहले आपने ये लिखना है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो हम इसकी तरफ हम जा रहे हैं, वो है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, हम उसको थोड़ा सा लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हमारा टॉपिक है। पहली बात इंपॉर्टेंट जो याद रखने की ये है अब्दुल्ला, वो ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैड डेट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज compare these two concepts. These two concepts are not supposed to be compared, otherwise they will confuse you. Because provision is a liability for uncertain time and uncertain amount.
You need to write it down. Provision is a liability for uncertain time and uncertain amount. जी. Provision is a liability for uncertain time, uncertain amount. Provision एक ऐसी liability है, liability का मतलब obviously it is payable, जिसकी अमाउंट का हमें नहीं पता कि कितनी पे करनी है और ये भी नहीं पता कि कब पे करनी है. देखें, प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो हमने कब पे करनी है ये भी नहीं पता और कितनी अमाउंट की पे करनी है ये भी नहीं पता. प्रोविजन इज ए लायबिलिटी फॉर अनसर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन अमाउंट, जिसके ना टाइम का पता है ना अमाउंट का पता है, बट लायबिलिटी है, कोई ना कोई अमाउंट तो है, कभी ना कभी तो पे करनी है, लेकिन पे करनी है और कितनी अमाउंट की पे करनी है तो नहीं होता. तो प्रोविजन जी. और डाउटफुल डेट्स क्या होता है? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैड एंड डाउटफुल डेट्स? बैड डेट्स का मतलब सर डाउटफुल ये होते हैं जो आप एक assumption बनाते हो कि इतने बैड डेट्स हो सकते हैं, जी और बिल्कुल, बैड डेट्स होते हैं जो आपको नहीं मिलते, जो हाँ जी, कंफर्म होता है कि नहीं मिले. जी बिल्कुल. इसका मतलब है कि बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो उन ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए होती है जिन्होंने फ्यूचर में हमें पैसे देने होते हैं और जी. शायद ही हमें पैसे नहीं दे पाए, हम उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं. तो मैं लिखता हूं, अभी देखें, प्रोविजन is created for the expected. आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं. फ्यूचर for the expected future doubtful debts for which we create a loss, out of profit. एक लॉस बना लेते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर इट्स अकरेंस. जी. Before its occurrence, according to prudence concept. जी. This is basically प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है हमारा. और प्रोविजन का हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है हमें कि प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द एक्सपेक्टेड फ्यूचर डाउटफुल डेट्स. जिन लोगों ने फ्यूचर में हमें पे करना है, ठीक है, उनके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं. यानी कि कुछ पैसे प्रॉफिट से निकालकर अपना लॉस बना के रख लेते हैं, प्रॉफिट को कम कर देते हैं, पैसे प्रॉफिट्स में से निकालकर प्रोविजन की बास्केट में डाल देते हैं ताकि फ्यूचर में अगर लॉस हो तो बिफोर इट्स अकरेंस हम पैसे साइड पे निकाल कर रख लेते हैं ताकि बाद में महसूसमत ना हो, टू अवॉइड दैट लॉस, टू बियर दैट, सो दैट वी कैन इजीली सस्टेन दैट लॉस. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बिफोर इट्स अकरेंस एंड फ्यूचर प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर लॉसेस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को हम इग्नोर कर देते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते. तो प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द एक्सपेक्टेड फ्यूचर डाउटफुल डेट्स फॉर व्हिच वी क्रिएट अ लॉस आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर इट्स अकरेंस अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. Provision for doubtful debt is a liability account. And it's closed with the name balance carried down. It is closed with the name balance carried down. Because it is a account, that's why it is closed with the name balance carried down, because their balances are going to be transferred to the next year. Provision for doubtful debt हमारा liability account होता है और उसको हम क्लोज करते हैं किससे? बैलेंस कैरिड डाउन से, क्योंकि उनका बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर का बन जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन. यस. एंड
is created as a percentage on the amount of trade receivables. It is created as a percentage on the amount of trade receivables. ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट पर एक परसेंटेज होती है जो आप प्रोविजन की क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स फर्ज कर लें 10,000 के हैं और मुझे उन पर शक है कि फ्यूचर में वो पैसे नहीं देंगे, तो जितने परसेंट आपको शक होगा उतने परसेंट की आप प्रॉफिट में से पैसे निकाल कर सेट असाइड कर लेते हैं, एक प्रोविजन की बात रख लेते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में लॉस हो भी जाए तो हम उसके इजीली बियर कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, हमें महसूसमत ना हो, उसकी अवॉइड कर सकें, हमारे पास ऑलरेडी कुशन मौजूद हो। क्वेश्चन का मतलब है, इफ आई एम वेयरिंग ए रिस्क प्रूफ जैकेट, इफ यू आर गोइंग टू गिव मी पंच, इट विल नॉट हर्ट मी बिकॉज देयर इज ए जैकेट का कुशन है जो आपके प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगा और मुझे महसूस नहीं होगा, ताकि हमें उतना लॉस महसूस ना हो। तो provision is created for the expected future doubtful debts for which we create a loss out of profit before its occurrence according to prudence concept. और provision for doubtful debt is a liability account होता है, that's why it is going to be closed with the name balance carried down, and it is always created as a percentage on the amount of trade receivable. अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम इसको थोड़ा अपने जो व्हाइट बोर्ड है उसको बताते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, जारी बात है, क्योंकि मैंने आपको बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट जो है वो अलग हैं, इनको आपस में आप नहीं कर सकते। दीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपस में हम मर्ज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। यस, यही आपने चलना है। देखते हैं हम इसको कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू क्लीन द होल बिकॉज of the reason that we are still प्रोविजन का जो लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसलिए उसको मैं प्रॉपर्ली जो है वो क्लीन नहीं कर रहा। बस इसी के थ्रू हम थोड़ा सा कर लेंगे काम अपना, ताकि हम आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकें। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई कंसर्न नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए इनको प्रिपेयर करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। अलग तरीकों से बनाए जाते हैं, इनको आपस में आप कंपैरिजन अगर करेंगे तो दैट क्रिएट ए कंफ्यूजन इन योर माइंड। उस कंफ्यूजन के लिए हमारा तरीका होता है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डिफरेंट नेचर में और अलग अलग जहन में अलग अलग लेके चलते हैं, ताकि हमें जो है ना हमें अंदाजा होता रहे कि हमने इसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। जी देखते हैं जी, सपोज करते हैं जी कि हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड हैं, यानी कि साल के जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको हम देखते हैं कि वो कितने हैं, उसके हिसाब से हम फिर जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, 2010 में 2010 में मेरे ट्रेड रिसीवेबल जो है, एक मिनट जी, 2010 में जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल है वो है जी कितने के, 10,000। ओके जी, 10,000 के 2010 में मेरे ट्रेड रिसीवेबल है और मुझे डाउट है कि इसमें से 5% लोग दे पाएंगे। इट मींस आई वांट अ प्रोविजन ऑफ 500 बिकॉज़ आउट ऑफ 10,000 5% of the trade receivables are not going to make me the payment, and because they are not going to make me the payment, I have to create provision or loss out of it, which should be kept aside to avoid that loss in the future according to prudence concept. Okay, prudence concept है कि future losses को आप वक्त से पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एंट्री टू इंक्रीज प्रोविजन या प्रोविजन की एंट्री हम क्या पास करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओह सॉरी, एंट्री क्या होती है प्रोविजन की, वो एंट्री है बेटा इनकम स्टेटमेंट डेबिट विद 500 and provision for doubtful debts will be credited because it's a liability account, it has to be credited। provision for doubtful debt जो है वो हमारा क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट हो जाएगा।
because it has to be credited with the amount of 500. So this is the entry to for the provision. इसका logic समझ लेते हैं. Income statement debit हो रहा है because it is an expense. Expense always debit. Provision for doubtful credit हो रहा है because it's a liability account. तो liability हमेशा credit होती है. सारी liability कैसे है? देखिए, जब हमने पैसे निकालकर साइड पे रख दिए तो उसका मतलब है कि मैं उस पैसे को किसी एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकता. It means I am liable to use that money for a specific purpose. So I'm liable to use that money for a specific purpose, which is to avoid bad debts. That is why the entry to increase the provision is income statement debit. It is an expense. And provision for doubtful debt credit because it's a liability account, and increase in liability is going to be credited. So liability हमारी क्या हो रही है? Increase हो रही है, इसलिए मैं उसे क्या कर दूंगा? Credit कर दूंगा. तो ये है करने की entry. जी सॉरी, मैं जरा पानी पी रहा था. जी नहीं पंगे नहीं लेने, शैतानियां नहीं करनी. अच्छा, अकाउंट बनाते हैं जी हम इसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. आपको इतना मजा आया कि आपने कहा कि चलो मैं भी थोड़ा हाथ करके दिखूं. जी अकाउंट मैंने बनाना है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में बना रहा हूँ. तो देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे. ये हमने लाइन डाली है और ये इसके नीचे हमने लाइन लगा दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. आगे देखते हैं जी, इधर हमारे डॉलर के साइन आ जाएंगे. This is I'm going to prepare the entry for 2010 first. So I will write 2010 the column, and then I am going to start the next portion of the question. That is that provision for doubtful debts is always created at the end of the year. It is always created at the end of the year on the amount of trade receivables which are supposed to pay, afterwards, which are supposed to pay in the next year. जिन्होंने अगले साल पे करना है उनके लिए आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं 31st December. एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से. प्रोविजन डाउटफुल डेट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 500 से. किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से. जी पोस्ट किया ना इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरा क्रेडिट हो गया 500 से. किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से. दैट्स इट. इसका मैं टोटल कर लूंगा. टोटल मेरा कितना आ जाएगा? इधर क्रेडिट साइड बड़ी है, I will write क्रेडिट साइड 500. इधर भी मेरा आ जाएगा 500, and I will close the account at the end of the year on 31st 12. Name balance carried down as I discussed with you. ये लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट का बैलेंस जो क्लोज होगा वो बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से क्लोज किया जाएगा. अब नेक्स्ट हम बनाते हैं 2011 का ईयर का जो आपने बनाया. 2011 के अंदर सबसे पहले जो पिछले साल का बैलेंस कैरिड डाउन है वो नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि वो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है. इट शोज दैट you are having a provision of 500 in your account at the start of 2011. 2011 के स्टार्ट में आपके पास पहले से प्रोविजन पड़ी हुई है. कितने की? 500 की प्रोविजन आपके पास अवेलेबल है जी. आपने प्रोविजन को 500 से इंक्रीज करना होता है, 500 तक इंक्रीज करना होता है, 500 से इंक्रीज नहीं करना. ये आपने जहन में याद रखना है. प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड फ्रॉम 0 to 500 बट नॉट बाय 500. इससे नेक्स्ट एंट्री में समझाऊंगा कॉन्सेप्ट में. देखें 2011 की बात करते हैं अब हम. 2011 में हमारे ट्रेड रिसीबल जो हैं वो है 20,000 और इस पर जो प्रोविजन की परसेंटेज है वो 4% है. लेट्स सपोज तो आपकी कितनी आ जाएगी प्रोविजन? 800. सो एट द एंड ऑफ 2011 यू नीड ए प्रोविजन ऑफ 800. So you have to see first that how much provision is available with you. The provision available with you is basically 500. So you have to increase the provision by 300 because provision is supposed to be increased from 500
to 300, not by 800, not by 800. तो 500 को मैंने 800 बनाना है तो मुझे 300 से इंक्रीज करनी पड़ेगी. Entry will remain the same. Income statement debit, provision for doubtful debts credit by 300. Provision for doubtful debts credit हो रहा है कितने से? 300 से. इसकी वजह से income statement की वजह से the name will come of the opposite side. Sorry. And it is always created at the end of the year because it is created for the future year. Next year जो आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं उन पर प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं. अब अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये हमारी प्रोविजन उतनी ही बन जाएगी जितनी प्रोविजन की हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि 800. So now total will become 800. Here it will also become 800. And at the end of the year, which is 31/12, ये भी आपका क्या आ जाएगा? Carried down. Oh, sorry. Yeah. Carried down लिख लिया आप 800 का. And this carried down will become the brought down of the next year in 2012 on 1/1 को हमारे पास प्रोविजन जो है वो पड़ी हुई है अगले साल के स्टार्ट में brought down 800. ये कौन सा बैलेंस है जो मैंने 800 यहाँ पे लिखा है बेटा? ये क्रेडिट बैलेंस है. और जो ऊपर लिखा है कैरी डाउन, ये कौन सा बैलेंस है? ये भी क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस लिखे होते हैं, बैलेंस हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड का होता है और प्रोविजन हमेशा एंड पे क्रिएट की जाती है फॉर द फ्यूचर डाउटफुल डेट्स. अब हमने 2012 की बनानी है. सपोज कर लेते हैं कि 2012 में हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल हैं 25,000 के हैं और इन पर जो हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है वो आपकी जो है वो 6% है. 6% आप निकाल लें, ये आपकी कितनी आ जाएगी? 1500. Now I have to look at how much provision is already available. The provision which is available with us is of 800. Now in order to increase the provision to 1500, I will increase the provision by 700, not by 1500. मुझे 1500 से इंक्रीज नहीं करनी, 1500 तक इंक्रीज करनी है. Increase the provision by 700. I will post the entry. Provision for affiliate is going to be credited by 700, and the name will come of the opposite side, which is 31/12 at the end of the year with the name income statement. And when I am going to total it, my total provision will become the same which is required actually for this year. Total provision which is required, and that is 1500, because 800 plus 700 it automatically become 1500. Here also I will write 1500. Oh. And at the end of the year, which is 31/12, I will write the balance carried down, which is again 1500. And this 1500 will become the brought down of the next year. Because brought down लिखना जरूरी है वरना आपके नंबर कट जाते हैं. और ये जो brought down लिखा मैंने, ये शो कर रहा है कि आपके पास 2013 के स्टार्ट में इतनी प्रोविजन 1500 की प्रोविजन पहले से पड़ी हुई है, यानी अवेलेबल है. So at the start of 2013 you have 1500 of provision available with us. अब देखते हैं 2013 में हमने कितनी प्रोविजन बनानी है. सपोज करते हैं कि अब्दुल्ला कि 2013 में हमने प्रोविजन बनानी है 1000 की. आप बताएं कि हमारे पास तो प्रोविजन ज्यादा पड़ी हुई है. हमारे पास तो प्रोविजन 1500 की जगह प्रोविजन रिक्वायर्ड जो है that is less than 1500, that is 1000. So we have excess provision than required. So we are supposed to decrease the provision. So in order to decrease the provision with an amount of 500, I am going to pass the reverse entry. I am going to pass the reverse entry, and the entry to decrease the provision of doubtful debts or the reduction in provision for doubtful debts, वो the same entry की reverse entry होती है. यानी provision for doubtful debts debit and income statement is going to be credited. So this is the entry to decrease the provision, and the amount is 500 because the provision available with us is 1000 was 1500, and I want to decrease the provision by 500 to make it 1000, क्योंकि मुझे प्रोविजन चाहिए सिर्फ 1000 की है. अगले साल में मुझे प्रोविजन ही 1000 की चाहिए. उसके लिए मुझे जरूरी है कि मुझे जो है वो प्रोविजन को डिक्रीज करना पड़ेगा. In order to decrease the provision, you used to pass the reverse entry, and the entry is going to be provision for doubtful debts debit,
income statement credit. So it will come on the debit side of with the name income statement, and again we will go for the balance carried down. अगर आप गौर करें तो बैलेंस कैरिड डाउन आपका उतना ही बन रहा है जितना कि हमारा आना चाहिए आंसर, वो हमारा सेम आ रहा है। और करें तो बैलेंस कैरिड डाउन जो आपका है, देखें यहाँ पे 500 है, देखें ये 500 ही आपका बन रहा है। यहाँ 800 है तो देखें ये 800 ही बन रहा है। यहाँ 1500 है तो ये देखें 1500 ही बन रहा है। यानी योर बैलेंस कैरिड डाउन is basically becoming the same, which are basically the required provision in this question. जो required provision है उतना ही आपका बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो डेवलप होके बन रहा है। तो this is how we have gone through the provision for the topic of this question. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप इससे आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें यहाँ तक कोई मसला तो मुझे बताएं। नहीं सर। Always remember that bad debts and provision for doubtful debts is totally different concepts. You are not supposed to merge these concepts, otherwise it will become very difficult to handle the situation, because they are two apart questions and which are supposed to be tackled in two different manners. Bad debts is an expense for the business, it is debited, and trade receivable is going to be credited. But provision is created for the expected future doubtful debts. It's a liability account, and the entry to increase provision is income statement to provision for doubtful debts, and to decrease is going to be the reverse entry, and it is always closed with the name balance carried down. That will become the drawdown of the next year. So next year we have to see that either we need to increase the provision or decrease the provision accordingly. उसके हिसाब से हम increase करते हैं, decrease करते हैं, और फिर हम question को solve करते हैं। जी, anything you want to ask, any problem you can ask me. No sir, no problem. अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उसमें प्रोविजन डिक्रीज भी होगी और प्रोविजन इंक्रीज भी होगी। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक काफी है आज के दिन। क्या ख्याल है आपका? जी सर, काफी। हाँ जी, ताकि जो है वो कॉन्सेप्ट ज्यादा हमारे जो है वो कॉम्प्लिकेटेड में ना चले जाएं या ज्यादा ट्रबल ना करें। तो ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। तो ओके सर। इन द क्लास, जी सर। मैंने कहा हाउ डिड यू फाइंड द क्लास? इट वाज क्वाइट इंटरैक्टिव, गुड। हाँ जी सर। चलिए इंशाल्लाह ताला, इट वाज गुड। हाँ जी, चलिए अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला आप जल्दी तबीयत आपकी ठीक हो जाए। ओके ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी, टेक केयर। हाफिज।